Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all in the PMS Girls 1 online classes. I'm your science teacher. Here you can see your science textbook, Oxford Secondary Science 2 by Terry Jennings. This is the course contents of class 7. First two chapters we will be study from biology. Chapter 1, the digestive system. Chapter 2, respiration and energy from food. Next two chapters will belong to chemistry. Chapter 7, water everywhere. Chapter 8, atoms. From physics, chapter 13, circuits and electric currents. Before starting our new chapter, we are going to discuss the definitions of the three branches of science: biology, physics and chemistry. The definition of biology is the science that deals with the phenomenon of life and other living organisms. Chemistry, the scientific study of structure, properties and reactions of the elements and the compounds they form. Physics, the scientific study of matter, space, time, energy and the relationship between them. Dear students, it will be better for you to learn and write these three definitions in your neat copies, as well as it will be better to learn too. Now we are going to start from your first chapter. Student, actually your digestive system belongs to three steps. We have to study digestive system into three steps. Take out your book page 2. This is your first chapter from biology, the digestive system. So, I already told you that our digestion process takes place into three steps. Now, we are going to discuss these steps one by one. The first one is taking food. Second one is absorption of food in the blood. And the third one is excretion of excess food from the body. So, now we are going to discuss the first one. First of all, a question arises: why we take food? We take food to get energy. Why we need energy? We need energy to do our activities, to perform our daily routine activities. So for this purpose, we should take food. The second one is absorption of the food in the blood. When we take food, it must be digested, that it will be able to absorb into the blood. The third one is excretion of excess food from the body. How we will excrete when the food is absorbed into the blood? So, some part of the food which we cannot digest, it must be excreted from the body. Dear students, जब हम फूड लेते हैं तो उसका कुछ पार्ट ऐसे होता है जो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती. इसलिए उस फूड का जो एक्स्ट्रा फूड है बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है.
Dear students, we should take balanced diet. Whenever we take diet, we should keep in mind that we should take balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet means eating the right variety of foods in the right amounts. यानी बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें हम फूड में हर किस्म के हेल्दी फूड ले लें ताकि हमारी बॉडी की तमाम ज़रूरतें पूरी हो सकें. Our body needs variety of foods to grow and for better performance. These kinds of foods are called nutrients. Nutrients वो तमाम good foods जो कि हमारे सेहत की अच्छी ग्रोथ के लिए और हमारे हेल्दी होने के लिए ज़रूरी है, they are called nutrients. All the foods we eat falls into 5 basic categories. If you look the book page 2, so there are the 5 food groups. The first one is carbohydrates, proteins, the third one is fats, fourth one is minerals, and the fifth one is vitamins. So all these 5 are called nutrients and we must take it in the right amount. Now we are going to discuss it one by one. Carbohydrates. Carbohydrates are the quick energy sources. It gives us quick energies. All the nutrients have different jobs and they have also come from different sources. यानी ये तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये अपना अपना फंक्शन अलग अलग प्ले करते हैं एज वेल एज ये डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास आते हैं. लाइक carbohydrates comes from starches like sugars, rice and potatoes, etc. Okay, now we are going to discuss proteins. Proteins are body building foods. They also help in making new cells. यानी बॉडी बिल्डिंग करते हैं. इसका मतलब है कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाते हैं. एंड आल्सो नीडेड टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. गॉड फॉरबिड, बट इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट या कोई इंजरी हो जाए और हमारी बॉडी के सेल्स या टिश्यूज को नुकसान पहुंचे तो प्रोटीन्स उसकी दोबारा से रिपेयर करते हैं, उनकी दोबारा बिल्डअप करते हैं. सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर बीन्स, मीट, pulses and fish, etc. These are the sources from which we should take proteins. Now, the third nutrient which we are going to discuss is fats. Fats are stored as a layer of insulation under the skin. Fats produces twice more energy than carbohydrates. Extra fats are stored under the skin in the form of layers to keep the body warm. हमारी बॉडी में फैट्स ऐसे स्टोर होते हैं कि वो जो है स्किन के नीचे एक लेयर बना देते हैं. इससे फ़ायदा ये होता है कि ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. Dear students, sources of fats are greasy things like butter, oil, yogurt, cream, etc. So जो चीज़ अगर हाथ पे लग जाए और हमें ऑयली फील हो तो मीन्स कि इसमें फैट्स मौजूद हैं. फैट्स आल्सो आवर बॉडी नीड्स लिटिल अमाउंट ऑफ फैट्स. हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए. Now the next nutrient is, you look at the book page 2, this is minerals. The group of elements are called minerals, including calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus needs to build bones and teeth. हमारे टीथ और बोन्स को बिल्डअप करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है.
Iron, it's also a mineral. Iron helps to transport oxygen because it is present in red blood cells. Sodium and potassium, they keep nerves functioning properly. हमारी बॉडी के nerves को, जैसे हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनकी फंक्शन को प्रॉपर रखने के लिए सोडियम पोटाशियम का लेना बहुत ज़रूरी है. Many tiny quantities of other minerals that help to keep us healthy, मतलब इन मिनरल्स यानी लाइक आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम के अलावा भी हमारे फूड्स में मिनरल्स मौजूद होते हैं. बट हमेशा रिमेंबर, ईच एंड एवरी मिनरल हैव इट्स ओन फंक्शन इन द बॉडी, बट कीप इट इन माइंड दैट डोंट एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनरल्स यूज्ड. Excess quantity of minerals is not good for our health. हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हमें हमेशा बैलेंस फॉर्म में लेना चाहिए. मिनरल्स, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स. Minerals mostly comes from fruits and vegetables. The next nutrient, this is vitamins. Vitamins are essential to your health, but again are only needed in tiny quantities. ये भी हमारी बॉडी में जो है लाइक मिनरल्स, विटामिन्स भी हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए. लाइक अगर एक इंसान को पूरी होल लाइफ में उसको जस्ट 250 ग्राम्स ऑफ विटामिन्स की ज़रूरत होती है. विटामिन्स की इम्पोर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट कीप इट इन माइंड दैट ऑलवेज टेक अ मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन्स. Vitamins is also a group of different components like vitamin A, vitamin B, vitamin C, and vitamin E. So vitamin B have a whole family. If you look, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9 and B12. The next one is vitamin C, and the next one is vitamin D and vitamin E. Vitamin A is essential for our good vision. Vitamin B, the whole family of vitamin B collectively called B complex, they gives us energies. Vitamin C is important for improving our immune system. बच्चे, इम्यून सिस्टम जिसे इन पेंडेमिक कंडीशंस में भी अक्सर डॉक्टर्स को टीवी पे, फेसबुक पे आप सुनते हैं कि आप अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाएं टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स. इम्यून सिस्टम में हम अपनी बॉडी के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ होती हैं जो डिफरेंट जर्म्स के ख़िलाफ़ लड़ती हैं. तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेमन वगैरह का यूज़ करें तो हमारा इम्यून सिस्टम ड्यू टू द विटामिन सी इम्प्रूव हो सकता है. विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स. विटामिन ई इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्दी स्किन. हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ई का लेना बहुत ज़रूरी है. Each vitamin have to perform its own function, which is essential for our health, but we must take tiny quantity of vitamin like minerals. Dear students, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मिनरल्स और विटामिन्स along with fats हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत नहीं होती, इसलिए we must take in minimum quantities. Okay, dear students, if you look the last para of page 2, for a healthy diet we also need fiber as well as water. Basic nutrients are 5, but these two also cannot be ignored. Other than 2 more things required for our healthy diet are fibers and water. Fibers,
Mostly we get fibers from fruits and vegetables. It helps to easily pass out from the body. As we were discussed, that excretion from our body is also necessary. So जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो उसको बॉडी से पास आउट करने के लिए हमें फाइबर लेना चाहिए. Water help to dissolve the food and to make up for the water the body loses when breathing, sweating, excreting, etc. Water is also very important. जब हम ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लूज होता है हमारी बॉडी से. स्वेटिंग यानी पसीने के फॉर्म में, एज वेल एज एक्सक्रीटिंग लाइक यूरिनेशन. तो ये पानी जब हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, इसको पूरा करने के लिए हमें फ्रेश वाटर टाइम टू टाइम लेना चाहिए. ओके dear students, now we are moving towards our next topics related to digestive system are large molecules present on page 3. If you look, large molecules, and another one is small molecules which is present on page 5, the small molecules. As both these topics are interrelated, that's why I am going to teach you both at same time. Now I want to check your previous knowledge. बच्चे, what is matter? Anything which occupies space and has weight is called matter. For example, solid, liquid, gas. Another question, what is atom? The smallest particle of matter is called atom, which cannot be further divided. Atom, जो कि मज़ीद हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, smallest particle of matter. Another question arises, what is molecule? When two or more atoms combine, they form a molecule. So, dear students, everything you eat is made up of molecules. But molecules are of two types, like large molecule and small molecules. Now, large molecules are carbohydrates, proteins and fats. As we were already discussed these molecules, we were discussed 5 components, but the larger one are carbohydrates, fats and proteins. These are energy giving and body building foods. The only way that large molecules pass through digestive tube into blood vessels is to make them smaller molecules. Yes, molecules, large molecules, small molecules, ये हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है मौजूद हैं. बट बच्चे, ब्लड में पास करने के लिए, ताकि आपके बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को ये मॉलिक्यूल्स मिले, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकअप करके डिफरेंट एंजाइम्स के हेल्प से उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाया जाता है, ताकि वो आसानी से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके. For this purpose, here is a flow sheet diagram. If you look, molecules, larger molecules, smaller molecules. Like carbohydrates, with the help of an enzyme, amylase, they are broken down into glucose and other simple sugars like maltose, fructose and galactose. Proteins are broken down with the help of protease enzymes into amino acids.
Fats are broken down with the help of lipase enzymes into smaller molecules like fatty acids and glycerol. These smaller molecules can easily be absorbed by the blood. So, dear students, the process of breaking down of larger molecules into smaller molecules and its absorption into the blood is known as digestion. Dear students, our next topic is digestion, which is on book page 3. If you look, this is digestion. We are going to start the digestion. The process of breaking down of larger molecules into smaller molecules and its absorption into the blood is known as digestion. Digestion is of two types. Number one is mechanical digestion, another one is chemical digestion. The name shows mechanical means machine, chemicals different chemicals. So वो digestion जो machines के through like our body में क्या है, mouth, teeth, stomach, these all are like machines. So this is physical breakdown of food into smaller pieces by chewing, churning, grinding and mixing of food in the mouth with the help of teeth before swallowing. Swallowing निगलना, खुराक अंदर निगलने से पहले सबसे पहले टीथ और माउथ के ज़रिए उसको जो है वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड किया जाता है ताकि हमें सोलो करने में आसानी हो. माउथ के साथ साथ मैकेनिकल डाइजेशन आल्सो अकर्स इन द स्टमक एज वेल by the contraction and relaxation of muscles of stomach. ये जो चर्निंग है, ये मूवमेंट है, उस खुराक को मूव करके उसको जो है अप एंड डाउन करके उसको मजीद स्मॉलर पीसेस में डिवाइड किया जाता है. So there is no chemicals involved during this process. That's why this digestion is called mechanical digestion. Come to the chemical digestion. Involves the chemical breaking down of food. It occurs by using acids, chemicals and enzymes. बॉडी के अंदर enzymes, acids और chemicals की मदद से उस फूड को मज़ीद प्रोसेस करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके इनटू द ब्लड. इधर बच्चे enzymes क्या चीज़ है? Enzymes speed up the process of chemical digestion. Some of the chemicals used in digestion are, for example, carbohydrates को smaller molecules में convert करने के लिए जो enzyme use किया जाता है, that is amylase. For proteins, protease, and for fats, lipase, which we already discussed. Each enzyme can carry only one job. For example, amylase enzyme is responsible to break down only carbohydrates. Protease break down proteins, lipase fats. यानी हर न्यूट्रिएंट का अपना अपना एंजाइम अल्लाह ने पैदा किया है. हम जो है एक एंजाइम की मदद से दूसरे न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. Students, if you look your book page 3, so this is the diagram of digestive system. Along with this, if you look, here is a model of digestive system. Digestive system is a 10 meters long tube starting from mouth till anus. So, mechanical digestion takes place from the mouth till stomach, and mechanical digestion takes place in the mouth till stomach, and chemical digestion takes place from the mouth till intestines. You look, here is small intestine and here is large intestine. So chemical digestion एंड तक पार्टिसिपेट करता है और मैकेनिकल डाइजेशन माउथ और स्टमक में फिनिश हो जाता है.
Okay. Um, Dear students, you must read page 2, 3 and 5 of your textbook. Okay students, that's enough for today. We will discuss the digestive process in next lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz. Stay safe.